Yeah, let's just. So ये cool नहीं हो रहा होने का मुझसे. Is this shit? Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे. So as you guys can see, I have a very pretty background which is totally new on my channel. So I am in Malaysia at my sister's place. So ये बहुत खूबसूरत background था, तो I thought why not to film few videos in front of it. So yeah, let me know if you like the video, and before starting the video, make sure you leave me a comment. Let me know who are you, what are you guys doing, how are you people, and yeah, let's just jump into the video. Okay guys, so जो आज की वीडियो है वो है इस मुल्तानी मिट्टी पे, which is totally purely a completely Pakistani brand. It is a KB herbal cosmetic which is being made in Lahore, Pakistan. It is the Shine Beauty, और ये किसी भी cosmetic store पे, किसी भी grocery store पे, हर जगह इसके counters available हैं. I got these masks for just 30 rupees. ये market में 30 rupees का easily available है. It is a Pakistani brand. It is so cheap yet full of nutrients and very good quality. तो मैंने एक बार use किया just like that. मैंने एक पैक उठा लिया, and then when I used it I was like यार ये कितना easy to use है, and it is so cheap on my budget. तो I thought I should get so many of these. ये सिर्फ इनकी मुल्तानी मिट्टी के variants हैं, and then I also have got their other variants which are their double cleanser mask. Then they have got the what is it, some mud mask, and then skin whitening massage, foot and hand soak, anti-pimple mask. They have variety of masks, but most of the masks which are not being used by myself, I won't be talking about this in the video, but the one I have used currently and I've been using it for so long is the Multani Mitti. You know, आप लोग मुल्तानी मिट्टी के rocks ले लेते हो, या आपको किसी भी powder form में मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है. That is very much okay for your skin, but उसके लिए थोड़ी hurdle करनी पड़ती है. You know, you get it, उसको mash करो, फिर उसमें पानी डालो, अर्क के गुलाब डालो, you know, things like that. But for this pack, what you need to do is you just need to open it up. और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद अपने ज़ाती पैसों से परचेज़ किया है. फाइन. सो इसमें क्या करते हैं, यू जस्ट हैव द बॉक्स, यू सिंपली ओपन इट अप, एंड व्हाट यू हैव इनसाइड इज़ दिस फॉयल शीट. इसके अंदर ये मास्क है. यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस just to mix everything, all the ingredients inside. इसकी सारी ingredients इसके बैग पे उर्दू में mentioned हैं. Also इसको किस तरह यूज़ करना है, which is also mentioned on the packaging. लेकिन मैं आपको फिर भी यूज़ करके दिखाती हूँ. What I do is I simply take the mask, I cut it open, I take a brush or I take my finger, जो भी आपको apply करने में आसानी हो. You can do like that. What you're gonna do is you're gonna tear the packaging like so, and then मैं headband पहनना भूल गई हूँ, but that's alright. I'm just going to have shower, जो कि मैं अभी नहा के fresh हो जाऊँगी definitely. Let me grab my mirror first so that I can see what is happening around me. Okay, so now, what you're gonna do, you'll be taking the mask onto your brush. It is not very runny, very liquidy, but it is kind of pasty consistency. And what I'm gonna do, I'm gonna apply simply onto my skin. इसकी खुशबू is very herbal, not irritating at all, floral भी है, but I like the खुशबू. I won't say कि इसकी खुशबू कोई बहुत फजूल सी है. No, it's really nice. तो इसको हम जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं quickly. I'll take more of it. I think for me, मैं अपनी shit. Okay, for me I applied on my face, onto my neck area, and yeah, I don't keep it in the fridge or anything, but अगर आप इसको बचा के फ्रिज में रखना चाहते हो for another use, आप ये भी कर सकते हैं. So let me quickly put it onto the areas. To be really honest guys, मुझे ना ये ब्रश यूज़ करने की आदत नहीं है, because I've never used a brush for a mask. और मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई, तो मैंने कभी ब्रश से मास्क अप्लाई नहीं किया. I usually use my fingers, but I thought कि देखा ये मास्क से बार ये ब्रश से गिरते ही जा रहा है. So I thought I'll apply it with the mask just to make it a little fancier. So yeah. Okay, so now see.
Multani Mitti is so good for skin tightening and it is so good for deep purifying your skin. आपकी skin के अंदर जो भी gunk होता है वो सारी ये निकाल देती है and it is it's the best thing for your skin tightening, जो आपकी collagen की deficiencies हो जाती है skin में उसको obviously improve तो नहीं करता but एक तरह से help करता है कि आपकी skin इससे tight रहे. उसके बाद आपकी स्किन को बहुत फ्रेश और ग्लोई भी बनाता है. सो आई एम डन अप्लाइंग ऑन टू माई फेस. नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे, एनी वे यू वॉन्ट टू अप्लाई यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. लेट मी क्विकली ड्राई माई फेस. आई विल शो यू ड्राई होने के बाद ये कैसा लगता है. देन वील गोना वॉश इट अप और उसके बाद वील सी कि इसका ग्लो कैसा है. इसको हम क्विकली से इस फैन से अपनी मास्क को ट्राई कर लेते हैं. इट फील्स सो गुड, सो कूलिंग. Guys, they have a lot of different variants. Let me talk about the other ones. So this is double whitening cleanser. If you have dry skin or patchy skin, you can always use this cleanser. इसकी quality, इसकी price पे मत जाइएगा. I don't get it कि लोग कहते हैं कि बहुत सस्ता है तो बहुत बुरा होगा. No, it's not always like this. क्योंकि पाकिस्तान में पंसार की दुकान या जो shops जहाँ पर herbal products available होते हैं, they are very on cheaper side. क्योंकि we have a very blessed land जहाँ पे सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है. सो इसके हर बॉक्स के पीछे इसका यूजेज लिखा हुआ है. मेक श्योर यू बाय अकॉर्डिंग टू योर स्किन. दे ऑल्सो हैव हैंड एंड फुट सोक. यू कैन ऑलवेज पुट इट ऑन योर हैंड एंड योर फीट एंड देन सोक इट इन साइड द वाटर. एंड देन दे ऑल्सो हैव द मड मास्क पाउडर. सो दिस इज़ अ पाउडर फॉर्म. वॉट यू विल डू, यू आर सपोज टू मिक्स इट विद ईदर रोज़ वाटर, मिल्क और simple plain water and then make a mask out of it and then apply it on your skin. I don't prefer such mask जिसमें आपको इतना कुछ हासिल करनी पड़ती है, but I definitely love this liquid Multani Mitti which is so good and very cheap on your budget. Let me know अगर आपने इसको पहले कभी यूज़ किया in the comment section कि आपने इसको पहले कभी यूज़ किया है या नहीं. Oh guys, I forgot. इससे पहले कि मेरा मास्क सूज जाए और मैं बिल्कुल भी बोल ना सकूं. So what I want to show you how you guys can remove this mask. What I do, I don't do anything fancy. I simply go into the washing basin. I simply take a little bit of water onto my palm and then rub it off onto my skin and then shapar splash it onto my face and I wash it off. So if you are in a place, लेकिन the bathroom गंदा होता है, make sure you clean all the mess in the bathroom. Don't leave your bathroom like that, otherwise the person who's next he'll be cursing you so bad. So okay, so what else you guys can do? You guys can definitely check out some of these sponges. I don't know how you open it. I bought them but I don't know how to. खैर anyways guys, these are these tiny little sponges. ये आपको ब्यूटी पार्लर में भी नज़र आए होंगे या वैसे भी आपके पास होते होंगे. These are not the makeup sponges but these are the ones for your facial or facial cleanser thingies and these are the ones जिसके ऊपर बहुत मोटे मोटे pores होते हैं and then these are easy to open. I will open it for you guys and show you. Okay, so I got this one for 85 rupees, Pakistani rupees. और इस एक okay, so I got this pack for 85 rupees और इसके अंदर ये दो sizes available हैं. One is the larger one which is blue and then a smaller one which is pink. इसके अंदर बहुत tiny pores हैं. These are not very harsh on your skin. ये बहुत easily आप इसको गीला करें, इसको ऐसे करके scrunch निचोड़ें और उसके बाद आपने अपना मुंह इससे साफ़ कर लेना है. और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो ऐसे ही धो लें. इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इसको भी मैं आपको खोल के दिखाना चाहती हूँ. I so want to open this thing up but I don't know how to. I'm so grateful for my sister. She got me a pair of scissors. अब मैं इसको जल्दी से काट लेती हूँ क्योंकि पैकेजिंग is so stupid.
Okay, so now this is what the sponge looks like. It is very sturdy. अभी क्योंकि अभी गीला नहीं है, इसको आप पानी में डिप करें, it will increase its size and it will become very soft. तो इससे आप अपने ये इसको अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं, which I don't recommend. I recommend just. So also this is another type of sponge. Let's talk about it as well. Oh, it's so soft. This is so soft. This is very see, so this is not, this is like ding 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 ding. So yeah, these are two kind of sponge. These are facial sponges जो आप अपने cleansing या moisturizing या mask के बाद use करते हैं. Don't use your beauty blenders or something like that for facial removal. फेशियल रिमूवल, नो, द मास्क रिमूवल्स. सो या अब मेरा जो मास्क है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है. माई स्किन फील सो टायर्ड. आई विल गो टू द बाथरूम, वॉश माई फेस, कम बैक टू यू, शो यू द रिजल्ट्स एंड या स्टे ट्यून्ड. क्विक टिप हियर गाइस, कभी भी अपने मास्क को फुली ड्राई नहीं होने देते अपने फेस पे. लाइक एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन पैचेस हैं जो कि अभी भी डार्क हैं और दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ड्राइड. ये क्या करता है, आपकी जो स्किन का मॉइस्चर होता है, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, उनको सारों को निकाल के बाहर फेंक देता है, विच वी डोंट वांट एट ऑल. सो मेक श्योर जब आप अपना मास्क लगाते हैं इसको स्लाइटली सा वेट रहने दें बिफोर वॉशिंग योर फेस. सो इससे पहले कंप्लीट ड्राई हो जाए, आई गो एंड वॉश अप माई फेस एंड आई विल गेट बैक टू यू. Hey guys, so I've done washing my face. It feels so good. Make sure एक mistake मत करिएगा, वॉश करने के फ़ौरन बाद don't use your towel और गंदा तौलिया. ऐसा तौलिया जो बाथरूम में ऑलरेडी लटक रहा है या अलमारी में कहीं पे हैंग हुआ हुआ है, don't at all use it. क्योंकि जो आपने क्लिनजिंग की है, जो मुंह साफ़ किया है, वो वापस से गंदा हो जाएगा. अगर तो इफ़ यू हैव द टाइम टू लेट इट ड्राई बाय इटसेल्फ, उसको ऐसे ही छोड़ दें. इफ़ नॉट, यू कैन ऑलवेज यूज़ द टिशू पेपर जो कि बाहर है, ऑब्वियसली बाथरूम वाला टिशू पेपर डू नॉट. या फिर यू कैन ऑलवेज यूज़ कॉटन वाइप जो कि ड्राई कॉटन वाइप होता है, यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट. आई एम सिंपली गोइंग टू डैप माई फेस विद टिशू पेपर सो दैट थोड़ा बहुत ये ड्राई हो जाए. सो दिस okay guys, it feels so good. My skin feels so good. Okay guys, so this is all about the video. I hope you like the final look, the final result. It is so fresh, so moisturizing. इसके बाद you guys can apply any sheet mask or your serum, moisturizer, anything. I will definitely be applying a sheet mask after that. So yeah, this is all about the video. और हाँ, एक और बात ये कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं either you speak Urdu or you speak English. So guys, ना मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, ना बहुत उर्दू मेरी प्योर है, ना मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है. So this is how I talk. I cannot talk in उर्दू या सिर्फ मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती. मैं डेली लाइफ में भी अपनी इन टू लैंग्वेजेस को मिक्स करके बात करती हूँ क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा होता है. यू नो, प्रेप से लेकर यूनिवर्सिटी तक वी बीन टॉकिंग इन उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स कंबाइंड टुगेदर. सो दिस इज़ हाउ आई टॉक. सो या अच्छा नो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. सी आई यूज़ द वर्ड उम्मीद. थम्स अप फॉर दैट. सो या आई होप यू लाइक द वीडियो. मेक श्योर यू लीव मी अ वेरी नाइस गुड हेल्दी कमेंट. एंड या वैसे मुझे इतने हेट कमेंट्स आते नहीं. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट. मेक योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर cousins, your uncles, your sisters, your aunties to follow this channel. Tell them I am very good at YouTubing, which is no, I'm not. I'm trying to be super good, very regular at doing YouTubing. So yeah, this is all about the video guys. Take care, have fun. Allah Hafiz, bye bye. सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो आपकी जो घंटी है ना, इसको ज़रूर बजा दीजिएगा क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स आते हैं आपने वीडियो डाली, हमें नोटिफाई नहीं हुआ क्योंकि आपने घंटी नहीं बजाई. बाय.